viewers, एक नई वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ केमिस्ट्री फॉर ऑल बाय अयाज. Just like you know that I have uploaded one video about the acid and base and the theories about acids and base, and that concept is called as the Arrhenius concept. In the Arrhenius concept, I have told you the Arrhenius acid, the Arrhenius base, disadvantages and limitation of that concept, that why some compounds can be explained with the help of that theory but not the other compounds. Okay, so in the today video I will discuss and explain another theory of acid and base, which is called as Lowery and Bronsted, or Bronsted and Lowery. लोरी भी एक साइंटिस्ट का नाम है, ब्रांस्टेड भी है. एक साइंटिस्ट था यूएस में, दूसरा फ्रांस या जर्मनी में. दोनों ने एक ही काम किया था, एक ही स्पीशीज पे काम किया था. जो लोरी ने फार्मूले बनाए थे एसिड और बेस के हवाले से, लोरी ने जो एसिड और बेस की आइडेंटिफिकेशन की थी वही ब्रांस्टेड ने भी की थी. दोनों का रिजल्ट सेम था, दोनों के एक्सपेरिमेंट सेम थे, डिडक्शन सेम थे, इंटरप्रिटेशन सेम थे. दोनों के नाम को इसलिए यूज किया गया है. This is not the single scientist, the name of a single scientist, but this concept is the amalgamation of two scientists, क्योंकि दोनों का रिजल्ट्स, वर्क, एक्सपेरिमेंट वर सेम, तो दोनों को ट्रिब्यूट पेश किया गया है और उस ट्रिब्यूट का नाम है Lowery-Bronsted concept. So in this theory we will discuss that what is the meaning of Lowery-Bronsted acid and how we can identify Lowery-Bronsted acid in the reactions, and how we can identify Lowery-Bronsted bases. Okay, so let's start. First we will discuss Lowery-Bronsted acid. If I write proton donor species, what I have written, proton donor species, and the proton is actually the hydrogen atom, but when it loses a single electron, and that is the only one electron in the hydrogen atom, and if it loses that single electron, it becomes positively charged. So when there is positive charge on a hydrogen atom, it is called as proton, because now there is no electron with hydrogen, only proton, therefore it is called as proton. So acids, Lowery-Bronsted acids, are those species which can donate proton. Now we will discuss and write Lowery-Bronsted bases. That what is Lowery and Bronsted base? The species which can donate proton, so the other species will take proton or accept proton, so we can write proton acceptor species. What I have written? Proton acceptor species. Those molecules, those compounds, those ions which can accept proton will be called as Lowery-Bronsted base. Those atoms, those molecules, those ions, those compounds which can donate a proton, that will be called as Lowery-Bronsted acid. Now we will discuss with the help of chemical reaction, with the help of formulas, with the help of chemical chain, and we will identify that which substance is proton donor and the which one is a proton acceptor. Then we will identify and differentiate between Lowery-Bronsted or Bronsted-Lowery acid and base. Now look to these two reactions. Okay, I have written hydrochloric acid, also water. There are two lone pairs on oxygen atoms,
and two hydrogen has made bond with oxygen, two covalent bond. Now look to this bond. This chlorine is more electronegative as compared to this hydrogen. When we add hydrochloric acid in water, then this bond will be broken because due to the difference of electronegativity between two atoms. Now, if the bond has been broken, then what will be happen? Both the electrons will go towards chlorine atom and chloride ion negative species will be formed. And a proton will also form. Okay. Now this proton needs two electrons to complete its doublet rule. So it will go and attacks on those centers where there is lone pair. So the proton will be transferred from hydrochloric acid towards water because it needs this lone pair. With the help of this lone pair, the proton will make with a covalent or coordinate bond, because coordinate is also one type of covalent bond. So we can also write that a covalent bond. Okay. With the help of these two electrons, it makes coordinate or covalent bond with water. So from this example, it has been clear that HCl can donate a proton to water. So it is called as acid. And water can accept a proton, therefore it is called as base. Now what will be the net reaction when proton transferred towards water? So this compound will be formed, which is called as hydronium ion, and only one lone pair will be remaining, and there will be positive charge on the whole molecule, because here the proton is positively charged, therefore this molecule will be pura positive charge aa jayega and chloride ion will be formed. So from this reaction, it has been clear that HCl is Lower-Bronsted acid and water is Lower-Bronsted base. Okay. अगर इसका स्ट्रक्चर मैं ड्रा करूंगा तो क्या होगा? ऑक्सीजन 1 2 3, यहाँ पर लोन पेयर लिखो पॉजिटिव चार्ज. ये हाइड्रोनियम आयन का स्ट्रक्चर है, शेप. इस एग्जांपल में मैंने आपको क्या बता दिया कि वाटर बेस है. अब दूसरे एग्जांपल में मैं आपको बताऊंगा कि वाटर एसिड भी किस तरह. अब मैं वाटर का फार्मूला लिखता हूं. HOH I have written, which is also the formula of water. Okay. And I will write ammonia. Now if we look to this bond, there is covalent bond between hydroxyl ion and hydrogen atom. Okay. So when this bond is broken, what will be happen? Both the electrons will be transferred towards hydroxyl ion due to greater electronegativity of oxygen. It becomes negatively charged, it becomes positively charged. Proton will be produced. Now this proton needs a lone pair of electron or two electrons, so it will be transferred from here towards ammonia because there is lone pair on the nitrogen atom. So that lone pair will be used for bonding. और असल में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड किस तरह बनेगा अभी आपको बता रहा हूं. ये तीन हमारे पास क्या है? 1 2 3. ये तीन मेरे पास है कोवेलेंट बॉन्ड. नाइट्रोजन एक लोन पेयर हाइड्रोजन को देगा तो उस लोन पेयर से इस तरह कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा. इस पे मैंने एक वीडियो अपलोड की है, आयनिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड. उन वीडियोस को आप देखें तो ये आईडिया आपका क्लियर हो जाएगा. प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है तो होल मॉलिक्यूल पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और अमोनियम आयन बन जाएगा और हाइड्रोक्साइड आयन यहां पर प्रोड्यूस हो जाएगा. ठीक. अब अगर आप इसको कंबाइन करना चाहते हो तो अमोनियम आयन पे पॉजिटिव चार्ज है, हाइड्रोक्साइड नेगेटिव आयन पे नेगेटिव चार्ज है. दोनों अगर कंबाइन हो जाएंगे तो ये मॉलिक्यूल बनेगा NH4OH. तो इस मॉलिक्यूल में देखिए कितने बॉन्ड्स हैं? 3 कोवेलेंट बॉन्ड है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है. सो अमोनियम हाइड्रोक्साइड में 3 किस्म के बॉन्ड हैं. आयनिक बॉन्ड भी है,
कोऑर्डिनेट भी है, कोवेलेंट भी है. So such species has three types of bonds exist at one time. यहाँ पर देखिए वाटर प्रोटॉन डोनर बन चुका है, तो इसने प्रोटॉन डोनेट किया है, तो इसको कहते हैं प्रोटॉन डोनर. और इसने क्या किया है, प्रोटॉन एक्सेप्ट किया है. तो ये हो गया मेरे पास एसिड और ये हो गया बेस, लोअरी ब्रांस्टेड बेस, लोअरी ब्रांस्टेड एसिड. अब इससे पहले की रिएक्शन में वाटर ने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया था, यहाँ पर वाटर ने प्रोटॉन डोनेट किया है. व्हाट डज इट मीन? सच सब्सटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ लोअरी एंड ब्रांस्टेड कांसेप्ट आर कॉल्ड एज व्हाट? Amphoteric species, amphoteric substances which can act as acid as well as base. जो प्रोटॉन एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, प्रोटॉन डोनेट भी कर सकते हैं, जिनमें एसिड की प्रॉपर्टीज भी है, बेस की प्रॉपर्टीज भी. जो डुअल बिहेवियर का हामिल है, जिसमें डुअल बिहेवियर है, डबल बिहेवियर है, तो उन सब्सटेंसेस को कहेंगे एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस, जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन करते हैं, या जो एसिड के तौर पे भी काम कर रहा है, बेस के तौर पे भी काम कर रहा है, या अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी जो प्रोटॉन डोनर भी है, प्रोटॉन एक्सेप्टर भी है. इससे पहले रिएक्शन में वाटर प्रोटॉन एक्सेप्टर था, अब यहाँ पर प्रोटॉन डोनर है. सो अगर आ जाए पेपर में व्हाट आर एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ लोअरी-ब्रांस्टेड कांसेप्ट, या आ जाए व्हाट आर एम्फोटेरिक स्पीशीज, यू कैन आल्सो राइट दिस रिएक्शन दैट water donate proton to ammonia, therefore it is acid, and water takes proton from hydrochloric acid, therefore it is base. So on the basis of such two type of reaction, you can write that water is amphoteric substance. This was all about the Lowery-Bronsted concept. और ये जरूरी नहीं कि आप ये 2-3 एग्जांपल याद कर लें, आप बहुत सारे एग्जांपल याद कर सकते हैं, लेकिन इसमें स्पेशली कोऑर्डिनेट बॉन्ड का बनाना जरूरी है, क्योंकि इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही बनता है. ठीक है, बोरान ट्राइक्लोराइड के दरमियान रिएक्शन और अमोनिया के दरमियान रिएक्शन लेके, लेकिन उसमें प्रोटॉन आपको नहीं मिलेगा. ठीक है, अगर आप कोई और रिएक्शन लिखना चाहते हैं, मैं आपको एक और रिएक्शन हाइड्रोजन सल्फाइड आयन है, हाइड्रोजन सल्फाइड आयन है. ठीक, ये अगर वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, इसके साथ प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन वाटर को देगा तो हाइड्रोनियम आयन बनाएगा और सल्फाइड आयन प्रोड्यूस हो जाएगा. ठीक है, अगर आप ये नहीं लिखना चाहते तो आप हाइड्रोजन सल्फाइड लेके H2S, इसका रिएक्शन वाटर के साथ लेके, तो H2S के साथ 2 प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन वाटर को देगा तो क्या बनाएगा, हाइड्रोनियम आयन बनाएगा, और HS हाइड्रोजन सल्फाइड आयन विल बी प्रोड्यूस. तो ये यहाँ पर लोअरी-ब्रांस्टेड एसिड है, ये लोअरी-ब्रांस्टेड बेस है, यहाँ पर भी लोअरी-ब्रांस्टेड एसिड है, ये लोअरी-ब्रांस्टेड बेस है. तो वही रिएक्शंस होंगे, वही तरीक़ाकार होगा, सिर्फ बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा. सो दिस वाज ऑल अबाउट लोअरी-ब्रांस्टेड कांसेप्ट. अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई है तो वीडियो को लाइक भी दे, ग्रुप में शेयर कर ले, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले. केमिस्ट्री फॉर ऑल बाय